Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. May Allah bless you with His blessings and jubilant welcome to all of you in maths class. Dear students, today's topic is ratio and proportion, and today's as follows are: after this lecture, students will be able to solve relevant questions of ratio and proportion. Dear students, we will start today exercise 2 and question number 3. But first we discuss what is the proportion. Proportion we have already discussed in last lecture. What is proportion? The relation between equality of two ratios. इनके दो रेशियो मिलके एक proportion बनता है. So there are two types of proportions. First is direct and second is inverse. What is direct proportion? Direct proportion is a relation in which one quantity increase or decrease in a same proportion by increasing or decreasing the other quantity. Here is the example. हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल मीन टू से कि आपके पास मनी है, ठीक है, आपने शॉपिंग करी, जितनी ज़्यादा आपके पास मनी होंगी उतनी ही जितनी ज़्यादा आप बाई कर सकोगे. सो मनी भी इंक्रीज़ होगी तो आपका शॉपिंग आइटम भी आपकी इंक्रीज़ होती जाएंगी. मीन दोनों इंक्रीज़ होंगे. अगर आपके पास मनी होगी तो शॉपिंग आइटम भी कम होगी, तो दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं. here is the example of chewing gums and cost. ठीक है, 1 है फिर 5 है. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं. सो इफ़ वन इंक्रीज सेकेंड ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है, दोनों इंक्रीज होंगे और यहाँ दोनों डिक्रीज होंगे. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. And next one is inverse proportion. Inverse mean one thing is increasing, other is decreasing. If same proportion, the proportion in a relation in which one quantity increase by decreasing the other quantities and same quantity decrease by increasing the other quantity. यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है. I give you example. For example, you have to ready a board of your class. ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट उस बोर्ड को रेडी करते हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, और अगर मैं कह देती हूँ सपोज कि हाफ आवर लगता है, अगर मैं कहती हूँ कि 4 स्टूडेंट्स आपने बोर्ड रेडी करना है, सो यू विल कंप्लीट इंशाल्लाह इन 15 मिनट्स. सो वन थिंग, इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट, टाइम विल बी डिक्रीज. ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा रहे हो तो टाइम कम होता जाएगा, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा होता जाएगा. इनके एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी ज़्यादा हो रही है. टाइम ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट कम होंगे, अगर टाइम कम होगा तो स्टूडेंट ज़्यादा लगेंगे. सो सेम इज़ स्पीड एंड टाइम. अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा. हियर इज़ द एग्जाम्पल. So dear students, let's start question number 3 of exercise 6.2. You will learn the definition of ratio, proportion, direct proportion and inverse proportion. Question number 3 is 5:9 is a ratio. If we increase first element of the ratio up to 40, what will be the second element? First ratio has completed and you have to set the second ratio. In second ratio, first element is 40, other one we don't know, so that's why we let x. So let the second number element is equal to x. Then you set the ratio. So first ratio already has set it and second we set here. So it's joined by the proportion sign. So proportion sign is equal, we convert into is equal to sign. So dear student, we have done the practice of like these questions in previous lecture. So mean multiply with means and extreme multiply with the extreme. In extreme we have 5 and x, so 5 multiply x and 9 multiply 40. Now we have to find the value of x, so that's why here 5 is here multiply, so it will be here divide. दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कटिंग नाउ. सो 5 1s are 5, 5 8s are 40. सो लेफ्ट ओवर 8, 9 multiply 8. Answer is 72. So the second element is 72. You write your answer in statement. Dear students, question number 4 is what is the fourth element proportional of 1, 2 and
sorry 1, 3 and 4. Dear student, we have discussed in last lecture, this is called first proportional, second proportional, third and fourth. In the question you have 1, 3, 4, but fourth proportion you do not select x. So let fourth proportion is equal to x. Okay, so your question will be set like this: 1:3 proportion sign and 4:x. यानी कि एक रेशियो ये और एक रेशियो ये बन गई और जानिए द साइन ऑफ proportion. So mean multiply mean and extreme multiply extreme. So x1s are x and 3 4s are 12. So fourth proportional is 12. And next one is 5. Question number 5. Find the mean. अब वो कहते हैं mean proportional of 4 and 9. So dear student, you know these are extreme or these are mean. We have extremes. We have not in the question mean. So means will that we suppose x. So here will be 4 and here will be 9. In your question I have said let the mean proportional x 4:x proportional sign x ratio 9. So mean multiply with mean and extreme. अब जब हमारे पास 2x आ गए तो इट मीन आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वी ऐड पार्ट्स। जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम पार्ट्स को ऐड करते हैं। तो कितनी बन गई x की 2, x रेज पावर 2 x स्क्वायर। रीड कैसे करना है? x स्क्वायर 9 4s are 36. Now dear student, how we can solve this square? सो दिस इज़ द साइन ऑफ अंडर रूट। आप लोग इसको अंडर रूट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप छोटी क्लासेस में प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। और 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are और 2 3s are, ठीक है। तो 3 1s are 3। अब आपके स्टूडेंट 36 को सॉल्व करना है तो हमने 2 × 2 × 3 × 3। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट की 1/2 होती है। हमने इसके लिए इनके 2 2 के पेयर बना लिए ताकि वो इजीली इसके साथ कट जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने बताई 1/2, तो 2 के साथ कट सकते हैं ना 1/2। 1/2 कट विथ 2, सो द आंसर इज 2 हेयर 3। सो 3 2s are 6 विल बी आंसर, ठीक है। ये तरीक़ाकार है इसको रिमूव करने का। ओके, इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन यू कैन डिस्कस विद मी। 6 6 are 36 भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाना है, इतना अगर प्रोसेस नहीं करना। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन डू लाइक दिस, यानी कि आपने स्क्वायर इसकी जैसा बनाना है तो आप इसके ऊपर ये 2 लगा लें, ठीक है। तो आप इसका लेंगे तो 6 6 are 36 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये 2 इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हमें 2 के फॉर्म में लेना है इसको काटने के लिए। सो द आंसर इज मीन प्रोपोर्शनल इज 6। And the 6th question is, dear students, now look here at question number 6. If 150 shirts can be stitched on 6 sewing machines, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पर आप 150 शर्ट्स 6 मशीन पर स्टिच करते हो इन अ डे, 1 डे में, ठीक है। हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, ठीक है। वो कहते हैं 150 शर्ट्स आप एक दिन में 6 मशीन रिक्वायर है उसके लिए। और अगर शर्ट्स बढ़ा दी जाए 225 कर दी जाए तो वो कितनी मशीन्स आपको रिक्वायर होगी। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मशीन्स। सो डियर स्टूडेंट, जो आपको चीज़ फाइंड करनी है वो आपने सपोज करनी है, ठीक है। सो वी हैव आप रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द क्वेश्चन यू हैव द नंबर ऑफ मशीन वी हैव टू फाइंड। सो लेट्स सपोज इज इक्वल टू एक्स। सो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है तो वो आपने 2 टाइम फर्स्ट राइट करनी, एक रेशियो सेट कर देनी है, ठीक है। एक मशीन गिवन है और दूसरी मशीन फाइंड करनी है। सो दिस इज बिकम फर्स्ट रेशियो। और दोनों शर्ट्स जो हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यू कैन सी हेयर फर्स्ट शर्ट्स क्वांटिटी एंड, ठीक है, सेकंड शर्ट। तो शर्ट्स रेशियो शर्ट्स इट इज ज्वाइन बाय अ प्रोपोर्शन साइन। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 6 मशीन आपको गिवन है वो हमने यहाँ राइट कर लिया, दूसरी आपको फाइंड करना है। और शर्ट्स आपको क्वेश्चन में 150 और 225 गिवन है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही सीक्वेंस में राइट कर लिया। नो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वाई, जितनी बच्चे स्टिच हमें ज़्यादा शर्ट्स करनी होंगी उतनी ही ज़्यादा मशीन हमें चाहिए होंगी। सो दैट्स वाई
It's a direct proportions, indirect proportion, mean multiply with mean and extreme multiply with extreme. So x मल्टीप्लाई 150 and 6 मल्टीप्लाई 225। और बच्चे अब हमने ये वाली वैल्यू इधर मूव कर जाएंगे जैसे हमने प्रीवियस में किया। तो इसकी कटिंग चेक कर लेते हैं 5 के टेबल से। 5 4s are 20, और अगर ऐसे समझ ना आए तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 4s are 20 और 5 5s are 25। तो 5 के साथ कटिंग करने के बाद आपके पास 45 आ गया। सो 5 3s are 15 और ये 0 साथ में आ गया, ठीक है। 5 3s are और 0 ऐसे का ऐसे। सो नेक्स्ट इज again we use table of 5 6s are and 5 9s are। 6 1s are 6, 6 1s are 6, so left over is only 9। so x is 9 machines are required, so number of machines are 9। Dear students, do the practice of this. If you feel any confusion you can discuss with me. Take care. Allah Hafiz. Do the practice of questions as well examples and solve on your neat notebooks.